power 4, x to the power 5. Okay, it may be anything, but it is in the form x to the power some constant. But generally हम जो ये case 4 use करते हैं, in general cases either on the right hand side you will have x or you will have x square. बहुत रेयर केसेस में एक्स क्यूब या एक्स टू दी पावर 4 के साथ आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। तो केस 4 आपको कब डिस्कस यूज करनी है, व्हेनेवर योर राइट हैंड साइड इज आइदर इन द फॉर्म x और x स्क्वायर, इट मे बी x क्यूब बट जनरली इट इज नॉट देयर। ओके, तो आ गया समझ में कब यूज करनी है मेथड? Yes, ma'am. ओके, नाउ चेक हाउ टू यूज दिस मेथड। कब यूज करनी है हमें पता है, बट इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस मेथड। चेक, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पीआई का, लिखा है यहाँ पे। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला फॉर राइटिंग पीआई? 1 by auxiliary equation into RHS. नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं रहता है वो। ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। ये पूरा जो टर्म है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल ऑपरेटर है एफ ऑफ डी, 1 अपॉन एफ ऑफ डी को जनरली इनवर्स ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो इट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी कैपिटल एक्स, दिस इज अवर जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ओके, अब हर प्रॉब्लम में एक्स अलग अलग होता है, so depending on the form taken by x, we replace the value of x and we use the required shortcut method. This is our procedure. Okay, so our pi is 1 upon f of d capital X. So check how I have written here, 1 upon f of d. In place of x we must write down the term x to the power m, क्योंकि इस सिचुएशन में राइट हैंड साइड क्या है, x to the power m, so capital X is replaced by the term x to the power m. Is it okay? Yes, ma'am. ओके, अब देखो ये क्या करना है, इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है या एक ही स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। व्हेनेवर द राइट हैंड साइड is available in the form x to the power m, we need to expand this term. This 1 upon f of d, ये जो टर्म होती है ना, इसे आपको एक्सपांड करना होता है। ओके, और एक्सपांड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी राइट डाउन दिस f of d इन न्यूमरेटर। क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 1 upon f of d is the actual term. If you write down this f of d in numerator, what will be that term? F of d its inverse. Is it okay? So your pi is f of d inverse x to the power m. So remember only one step. If your right hand side is of the form x to the power m, how to get our pi? By expanding the term f of d inverse. Is it clear? Yes, ma'am. ओके, अब ये चीज आपको सिर्फ थ्योरी से बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, आई नो इट। सो व्हेनेवर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो वेट अ मोमेंट, माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now check what is the right hand side of the equation? What is the right hand side of the equation? X square. Okay, what is the form of x square? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर का? X power m. एक्स टू द पावर m। यस, एक्स स्क्वायर का फॉर्म एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, हाइपरबोलिक भी नहीं है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म x to the power m, where m is equal to 2. Clearly, we are going to use the fourth shortcut method for obtaining our pi. Naturally, CF find करने की प्रोसीजर तो वही होने वाली है as which we have used in earlier problems. So check how we are going to find out I. Let us solve the first problem on our fourth shortcut method. Solve d square y by dx square minus 4y is equal to x square. Okay, now as usual, first of all we are going to write down the given equation in the standard form. Okay, so how to write down it? We know that ddx is nothing but d. Okay, so d square y by dx square can be written as d square y. Okay, if ddx is capital D, obviously d square by dx square can be replaced by d square. First term becomes d square y minus 4y is equal to x square. Okay, now y can be easily taken common. We are left with d square minus 4y is equal to x square. Okay, now we can check that this equation is available in the standard form.
In which standard form it is available? F of dy is equal to capital X. Clearly, this equation is linear differential equation with constant coefficient. So, its solution is given by complete solution is equal to CF plus VI. Call it as equation number 1. Okay, as usual, we are going to find out complementary function first. Okay, and for finding complementary function, let us write down the auxiliary equation. So, to find CF, the auxiliary equation is f of d is equal to 0. Okay, now in our problem, what is f of d? Just now we have written the equation in the standard form. D square minus 4y is equal to x square. What is f of d? F of d is d square minus 4 is equal to 0. So we can easily find out roots of this equation. D square minus 4 equal to 0. So roots are, now d square minus 4 equal to 0 means roots are plus minus 2. Roots are d is equal to 2 minus 2. You can also calculate the roots with the help of your calculator. Okay, or manually also it is very much easy. D is equal to 4 we are getting. Roots must be 2 minus 2. Which type of roots are these? 2 minus 2, both are real roots and they are different. Roots are real and different. We must use the first case for writing our CF. How will you write down CF? C1 e to the power 2x plus C2 e to the power minus 2x. As our roots are real and different, we can easily write down our CF as C1 e to the power 2x plus C2 e to the power minus 2x. Call it as equation number 2. Okay. So, is there any difficulty in writing CF? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. See No, here, I ma'am. have already shared problems with you as it was required. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बोला था तो ठीक है. आई हैव शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट 6 शॉर्टकट मेथड विथ यू. तो जब भी ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे लेक्चर में, यू कैन गो थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड यू कैन चेक वेदर देयर इज एनी डाउट and we can discuss your doubt in the next lecture. Okay, so whether the calculation of CF is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In equation 1, complementary function is available. Sorry, complete solution is available as a complementary function plus VI. In equation 2, CF is available, complementary function is available. Now we have to find out our VI. Okay, so I am continuing this on right hand side. VI is equal to, as usual, write down the same formula. It is 1 upon f of d capital X. It is equal to 1 upon, write down f of d. In our problem, f of d is a d square minus 4. Okay, f of d is d square minus 4. And what is capital X? Function on the right hand side of the equation. You can check the given problem. जो differential equation हमें दिया है उसकी right hand side क्या है? X square. So capital X should be replaced by the term X square. Okay. At this stage, let us recall which shortcut method is applicable. We have already discussed the first shortcut method. In first shortcut method, exponential form is there. In the second shortcut method, sin x plus b or cos x plus b is there. In third shortcut method, sin h plus b or cos h b is there. And in the fourth shortcut method, we are having the right hand side available in the form x to the power m. आपका फंक्शन अगर x to the power m इस फॉर्म में अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी x bar 1 है, it may be x, it may be x cube. If such type of terms are available on the right hand side of the equation, we treat the form as x to the power m and we use the fourth shortcut. Clearly it is of the form x to the power m.
m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2. As our form is x to the power m, now we are going to use the fourth shortcut method. Okay, और अब ऑब्जर्व करो कौन सी स्टेप्स हम यूज करने वाले हैं इन फोर्थ शॉर्टकट मेथड. वी आर गोइंग टू एक्सपांड द टर्म 1 अपॉन एफ ऑफ डी. ये जो 1 अपॉन एफ ऑफ डी टर्म होती है इससे हमें एक्सपांड करना होता है whenever x is available in the form x to the power m. अब मुझे बताओ instead of m 1 upon f of d which term is available 1 upon d square minus 4. Just now we have written 1 upon f of d as 1 upon d square minus 4. Now you need to expand this term 1 upon d square minus 4. अब एक expansion ये possible है क्या? एक्सपांशन किस टाइप का अवेलेबल होता है? एक तो a प्लस बी स्क्वायर, यू कैन इजीली एक्सपांड द टर्म a प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस स्क्वायर a प्लस बी क्यूब. You can easily expand such type of terms. Okay, or you can also expand the term like 1 plus x inverse or 1 minus x inverse. Okay, क्या होता है? What is 1 plus x inverse? 1 plus x inverse is 1 minus x plus x square minus x cube and so on. Alternate positive and negative terms are there. In the expansion, 1 plus x inverse. In the expansion, 1 minus x inverse, you have terms like 1 plus x square plus x cube and so on. All the terms are positive. Okay, so just remember these two expansion, 1 plus x inverse and 1 minus x inverse. Okay, now again back to our problem. We have to expand the term 1 upon d square minus 4. Whether the expansion is possible? No. हम 1 upon d square minus 4 को कैसे भी expand नहीं कर सकते. Okay, तो क्या करना? Write down this term 1 upon d square minus 4 in some standard form. ओके, जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्म में हमें 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 को लिखना होगा. एंड द जनरल फॉर्म व्हिच वी यूज इज आइदर 1 प्लस एक्स इनवर्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स. ये दोनों रिजल्ट है वो हमें यूज करने होते हैं इन द फोर्थ शॉर्टकट मेथड. ओके, नाउ यू कैन चेक if you want to expand the term in the form 1 plus x inverse or 1 minus x inverse, which term is necessary? 1. आपको एनी हाउ 1 वहां पे जनरेट करना होगा अगर ये रिजल्ट्स आपको यूज करने होंगे. नाउ चेक व्हाट आई डू. फर्स्ट ऑफ ऑल to generate the term. Okay, so from the denominator d square minus 4 I will be taking minus 4 common. Why I am taking minus 4 common? Because I have to generate the term 1. Okay, क्योंकि मुझे एक तो 1 plus x inverse वाला फॉर्मूला यूज करना है या फिर 1 minus x inverse वाला फॉर्मूला यूज करना है. For that always take the constant term outside. Constant नहीं बोल सकते हम, always take the lowest degree term outside. Constant term अगर present है तो उसकी डिग्री ध्यान में रखो 0 होती है. अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो आपको लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो आउटसाइड लेनी पड़ती है. ओके, सो वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. वी आर टेकिंग minus 4 common. d square minus 4 is there. You are taking minus 4 common. From minus 4 I am left with 1. From d square I can write down the term d square upon minus 4. Minus sign I have already considered here. I am writing the term 4 here. Is it okay? From d square minus 4 I have taken minus 4 outside. From minus 4 I have 1 and d square I have written it as minus d square by 4. इस term को अगर सिंप्लीफाई करते हो ना तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिलने वाला है. ठीक है, then I have the term x square. Okay, now simplify it. Now just tell me whether there is any difficulty up to this step. क्योंकि जब तक स्टेप बाय स्टेप क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट लगने वाला है. सो इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. No, Ma'am, ma'am. will you explain last step? Last step, just see here, I have to expand the term 1 upon d square minus 4. This is my objective. But right now I cannot expand the term 1 upon d square minus 4.
इसे मुझे कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा ना एक्सपांड करने के लिए, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म विच आई विल बी यूजिंग इज either 1 plus x inverse or 1 minus x inverse. We can clearly observe that if we want to use these two expansions, which term is necessary? 1. 1 plus x inverse and 1 minus x inverse. In both the terms, 1 is important, 1 is necessary. That's why d square minus 4, in d square minus 4, I have to generate the term 1. How 1 can be generated? By taking constant term outside or by taking the lowest degree term outside. That's why I have taken minus 4 outside. Okay, which terms are left? 1 minus d square by 4. Is it clear? Yes, ma'am. एक्सपांड करना है उसे, इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसीलिए 1 जनरेट करना है। और वहां पे अगर डी स्क्वायर प्लस 3 टर्म रहती, डी स्क्वायर प्लस 3, आई मस्ट टेक 3 कॉमन। डी स्क्वायर प्लस 2 रहता, आई मस्ट टेक 2 कॉमन। दिस इज द minus 1 by 4 I will be writing as it is. Take this term 1 minus d square by 4 is now generated. 1 हमारा जनरेट हो चुका है। ये जो ब्रैकेट की टर्म है इसे न्यूमरेटर में आप कंसीडर करो। टेक दिस टर्म इन न्यूमरेटर, we get 1 minus d square by 4 its inverse into x square. Is it okay? Now check that expansion of this term is easily possible because अगर आप d square by 4 को एक्सट्रीट करते हो, d square by 4 को अगर आप एक्सट्रीट करते हो, you have the term available in the form 1 minus x inverse. Is it clear? 1 minus d square by 4 inverse, ये जो रिजल्ट है, ये जो टर्म है, इसके लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं? 1 minus x inverse. Okay, in place of x, which term is there? d square by 4. Okay, now what is 1 minus x inverse? 1 plus x square plus x cube and so on. तो अब मैं एक्सपांशन यहाँ पे यूज करती हूँ। I have 1 plus x, 1 plus x square. Okay, so 1 plus x, what is our x here? 1 minus x inverse के साथ अगर आप 1 minus d square by 4 inverse कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या है? d square by 4. So I can write down the term d square by 4. Okay, now the thing is that this expansion 1 plus x square plus x cube and so on is infinite. इस एक्सपांशन में से कितनी टर्म्स कंसीडर करनी है वो डिपेंड करता है इस टर्म पे। x to the power n वाली जो टर्म होती है जो कि इस प्रॉब्लम में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हाईएस्ट पावर x की क्या है? 2. So we will write down the expansion up to second power. Okay, x स्क्वायर की जगह पे x रहता तो मैं एक्सपांशन सिर्फ x तक लिखती, 1 plus x लिखती। x स्क्वायर की टर्म है, मैं एक्सपांशन 1 plus x स्क्वायर लिखूंगी। x स्क्वायर की जगह पे x क्यूब टर्म रहती, मैं एक्सपांशन 1 plus x स्क्वायर plus x क्यूब तक लिखती। ठीक है, so which terms I need to write down? 1 minus x inverse, ये एक्सपांशन से कौन सी टर्म्स मुझे लिखनी है? सिर्फ 1 plus x स्क्वायर। Why? Because x square is there, its highest power is 2. लिखो फिर वही टर्म 1 plus x मैंने लिखा plus x square. My x is d square by 4 its square. Here I will stop expanding into x square क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि एक्सपांशन से मुझे कौन सी टर्म्स लिखनी थी? 1 plus x square. Okay, now from this bracket write down only those terms in which you are interested. 1 plus d square by 4 plus d square by 4 square. अब मुझे बताओ d square का स्क्वायर क्या होगा? d to the power 4. d to the power 4 means fourth order derivative. ध्यान में रखो, d ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, d square सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, d cube is थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव and d to the power 4 is fourth order derivative. Now tell me whether fourth order derivative of x square is possible. x square को कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? Only 2 times. You can differentiate x square for the first time. उसका डेरिवेटिव हो जाएगा twice x को फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2.
2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. So you can differentiate x square at the most 2 times. That means we are interested in only 2 terms, d and d square. ठीक है, x square की जगह पे अगर सिर्फ x रहता यहाँ पे तो मैं सिर्फ d की टर्म लिखती. एक्स स्क्वायर की टर्म है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो इस ब्रैकेट में से मैं d और d स्क्वायर की टर्म लिखूंगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन पॉसिबल है. यहाँ पे अगर एक्स क्यूब रहता तो मैं d स्क्वायर और d क्यूब की टर्म्स लिखती. ठीक है, तो राइट डाउन द टर्म्स. इट इज 1 प्लस d स्क्वायर बाय 4 एंड d स्क्वायर बाय 4 square. This term will be d to the power 4. Fourth order derivative of x square is not possible. Neglect that term. I am having the last term x square. Simplify minus 1 by 4. अब normal multiplication करो. 1 into x square will become x square plus d square by 4 into x square. D square by 4 into x square. I have 1 by 4 constant and d square x square. D square means second order derivative. D first order derivative, d square second order derivative, and second order derivative of x square is what? 2. First order derivative x square का twice x है and twice x का derivative 2 है, तो d square x square is nothing but 2. Okay, so finally I get pi is equal to minus 1 by 4 x square plus 2 by 4 is 1 by 2. Call it as equation number 3. So is there any difficulty in getting pi? Ma'am, there should be d power 4 by 4. No, we have neglected that term. See here, d square means d to the power 4. Okay, d to the power 4 means fourth order derivative. आप लिखते भी हो, just tell me what is fourth order derivative of x square? 0. No need to write down that term. हमेशा ध्यान में रखो. 0. Whenever we are having the term of x, if you have the term only of x, you are interested in only one term, which is d, because first order derivative of d is possible. Okay, you are not interested in d square, d cube, and so on. If the term is x square, which terms we are interested? We are interested in the terms of d and terms of d square. d cube, d to the power 4 आपको निगलेक्ट करना है क्योंकि x स्क्वायर का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है या फिर जीरो है. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो है, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली राइट डाउन द टर्म्स ऑफ d and d square. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now CF is available, PI is available. Write down your complete solution by adding CF and PI. किसी को डाउट पूछना है? क्योंकि पहला प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ये मेथड ना डिफिकल्ट है. लॉजिकल है एक्चुअली, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफिकल्ट है. तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन. सबको क्लियर है? सबको मीन्स जो सुन रहे हैं उनको, सिर्फ जो सुन नहीं रहे उनका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. उनको पहले Yes, से ma'am. आ गया ना समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This way, the pi is available in our equation number 3. Okay, so CF is available, pi is also available. Now we can easily write down our complete solution. I am writing the solution on the left hand side. Complete solution लिखो. Complete solution is CF plus PI. CF क्या है? C1 e to the power 2x plus C2 e to the power minus 2x plus PI. PI is minus 1 by 4 into x square plus 1 by 2. Okay, in this way, we use the fourth shortcut method for solving our problem. Okay. So let us solve the second problem. Now, how to use the fourth shortcut method? It will be more clear to you once we solve this problem. Okay. So as usual, what is the standard form or what is the form of the given equation? Its standard form is f of dy is equal to capital X, and that's why we are going to write down its complete solution as CF plus PI. Call it as equation number 1. Okay, now I will be writing the complementary function directly. You already know how to get the complementary function.
if you solve the auxiliary equation, your roots will be -4 -1. So complementary function will be c1 e to the power -4x plus c2 e to the power -1x. Call it as equation number 2. Okay, so actually this is homework for you. For the given problem, try to find out CF, and your CF must be equal to c1 e to the power -4x plus c2 e to the power -x. We have to focus on calculation of PI actually. CF की तो प्रैक्टिस हर प्रॉब्लम में होने वाली है, लेकिन PI के पर्टिकुलर मेथड हमें यूज करनी पड़ती है. सो वी हैव टू concentrate on PI. Now, once complementary function is available, the next job is to find out PI. PI, use the formula 1 upon f of d capital X. Okay, now replace it 1 upon, replace your f of d. What is f of d? Check your problem. F of d is nothing but d square plus 5d plus 4. F of d is d square plus 5d plus 4. And what is capital X? आपकी इक्वेशन में राइट हैंड साइड को कौन सा फंक्शन दिया गया है? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. ओके, नाउ चेक इट केयरफुली. x square plus 7x plus 9. Okay, now check it carefully. Which shortcut method is applicable? Now observe whether this particular bracket or function inside the bracket is available in the exponential form. Clearly not. Okay, इसका मतलब first shortcut method applicable नहीं है. ठीक है, whether this function is available in the trigonometric form sin ax plus b या फिर cos ax plus b के फॉर्म में है क्या? नहीं है. Second shortcut method is not applicable. Whether it is available in the form of sin h plus b or cos h plus b, no. Third shortcut method is not applicable. What is our fourth shortcut method? If capital X is of the form x to the power m. m constant होता है, x to the power m का मीनिंग होता है x की टर्म, x स्क्वायर की टर्म, x क्यूब की टर्म. ऐसी टर्म्स अगर प्रेजेंट है तो हम फोर्थ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं. आप चेक करो, इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स है. x स्क्वायर का फॉर्म है x टू द पावर m, m की वैल्यू 2 है. x का भी फॉर्म है x टू द पावर m, m की वैल्यू 1 है. कांस्टेंट टर्म को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि कांस्टेंट टर्म को हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. कांस्टेंट टर्म can be expressed in the exponential form. जैसे मैं 9 को 9 into e to the power 0x लिख सकती हूँ, बराबर है. 9 को मैं 9 into e to the power 0x लिख सकती हूँ, क्योंकि e to the power 0x is what? e to the power 0. e to the power 0 is 1. 9 into 1 I get same 9. ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं 9 को लिख सकती हूँ 9 into x to the power 0. x to the power 0 is also 1. 9 into 1, 9. Here, e to the power 0x is exponential form. First shortcut method is applicable. This form, x to the power 0 is x to the power m. Fourth shortcut method is applicable. 9 को अगर मैं पहले तरीके से लिखती हूँ तो फर्स्ट शॉर्टकट मेथड यूज कर सकती हूँ. 9 को अगर मैं 9 into x to the power 0 लिखती हूँ तो मैं फोर्थ शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकती हूँ. इसका मतलब कांस्टेंट टर्म कैन बी मैनिपुलेटेड इन एनी वे. तो ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. हम जो वेरिएबल की टर्म्स है, बेसिक टर्म्स जो प्रेजेंट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. तो x स्क्वायर x टू द पावर m फॉर्म है, 7x में x का x टू द पावर m फॉर्म है. 9 को मैं 9 into x टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, तो 9 का भी फॉर्म में x टू द पावर m ट्रीट कर सकती हूँ. इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट मेथड यूज करने वाले हैं? फोर्थ शॉर्टकट मेथड. So follow the procedure mentioned in fourth shortcut method. So let us do it. क्या करते हैं हम फोर्थ शॉर्टकट मेथड में? ये जो 1 upon f of t टर्म है,
What is 1 upon f of d term here? 1 upon d square plus 5d plus 4. इसे आपको एक्सपांड करना है. एक्सपांड कौन से फॉर्म में करना है? आइदर, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, आइदर इन द फॉर्म 1 plus x inverse or in the form 1 minus x inverse. Okay, and for expanding it, which term is necessary? 1. एक्सपेंशन करने के लिए एक तो 1 plus x inverse वाला फॉर्म यूज करो, नहीं तो 1 minus x inverse वाला फॉर्म यूज करो. बट which term is important? 1. Okay, और मुझे 1 जनरेट करना है. For generating 1, I will be taking the constant term outside. जो भी f of d आपको होता है ना, उसमें से आपको constant term बाहर लेनी है, which is the constant term 4. Take 4 outside. क्यों हम आंसर ले रहे हो? So that 1 should be generated. 4 से आप 4 कॉमन लेते हो तो वहां पे क्या बचेगा? 1. 1 can be easily generated. So from d square plus 5d plus 4 I have taken 4 common. From 4 I am left with 1 और कौन सी टर्म्स बची? अब d square plus 5d, उससे मैंने 4 कॉमन लिया, so it should be divided by 4. Okay, and then I have the term x square plus 7x plus 9. Is it okay? From d square plus 5d plus 4, I have taken 4 outside and I have written this term. What is the next thing to do? So, is there any difficulty up to this step? Have you followed what we have done here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, we are following the same procedure which we have used in the last problem. वैसे ही हम कर रहे हैं. यहाँ पे anyhow हमें 1 जनरेट करना था, इसीलिए हमने 4 कॉमन लिया. वहां पे अगर d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 रहता तो हम लोग 2 कॉमन लेते थे. ठीक है, दिस टर्म इन न्यूमरेटर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्सपेंशन करना है, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है 1 plus d square plus 5d by 4, इसे आप न्यूमरेटर में ले लो, it becomes its inverse. So I am writing this on right hand side. di is equal to 1 by 4. Write down that term in numerator. 1 plus d square plus 5d by 4 its inverse. And which function is there? X square plus 7x plus 9. Is it okay? बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए. ठीक है, once it is done, now I have to expand this term. सिंप्लीफिकेशन के लिए इस टर्म को एक्सपांड करना जरूरी है. कौन सा फॉर्म है मुझे बताओ? d स्क्वायर प्लस 5d by 4. इसे अगर मैं x लेती हूँ, इस ब्रैकेट को अगर मैं x लेती हूँ, तो ये कौन सा फॉर्म है? 1 plus x inverse. अब मुझे बताओ what is the expansion 1 plus x inverse? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. It is 1 minus x plus x square minus x cube and so on. Alternate terms पॉजिटिव और नेगेटिव होती है. ठीक है, so instead of x, which terms are there? x की जगह पे कौन सी टर्म है? d square plus 5d by 4. अब मुझे ये एक्सपेंशन किस टाइप का करना है? 1 plus x inverse. But in 1 plus x inverse, infinite terms are present. 1 minus x plus x square minus x cube and so on. इनमें से कौन सी टर्म्स हमें लेनी है? वो डिपेंड करता है that which function is there on the right hand side of the equation. ओरिजिनल प्रॉब्लम में कौन सी टर्म प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में? देखो x square plus 7x plus 9, which is highest power term of x. x की highest power term कौन सी है? x square. x square है तो हम एक्सपांशन कंसीडर करेंगे अप टू सेकेंड पावर ओनली. हम सिर्फ 1 minus x plus x square यहाँ तक की टर्म लिखेंगे. ओके, x square plus 7x plus 9 की जगह पे x क्यूब वाली कुछ टर्म रहती, x क्यूब वाली टर्म रहती तो हम एक्सपेंशन अप टू थर्ड पावर लिखते 1 minus x plus x square minus x cube. ठीक है, but we are writing the expansion up to second power क्योंकि x square plus 7x plus 9 पे highest power term x square है, x की highest power 2 है, so write down the expansion 1 plus x inverse up to only second power. So write down it
pi इज इक्वल टू 1/4। अब एक्सपांशन लिखो, मुझे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है सिर्फ। मैं लिखूंगी 1 माइनस एक्स लिखना है। एक्स की टर्म मेरे प्रॉब्लम में क्या है, डी स्क्वायर प्लस 5d/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे है डी स्क्वायर प्लस 5d/4 इट्स स्क्वायर। आई मस्ट स्टॉप। मैंने एक्सपांशन देखो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/4 इनवर्स का कहाँ तक लिया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देन write down the original term x square plus 7x plus 9. Okay, now simplify the bracket. अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से आपको सिर्फ वही लेनी है टर्म्स जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 में हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर। अब फिर से आप एक्स को एक तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो, मींस यू आर इंटरेस्टेड इन द टर्म ऑफ डी। आप एक्स स्क्वायर को सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन द टर्म ऑफ डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, नो। इसका मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टर्म ऑफ डी क्यूब एंड डी टू द पावर 4। तो इस ब्रैकेट में से आपको डी क्यूब डी टू द पावर 4 की सभी टर्म्स, उसके आगे की टर्म्स निगलेक्ट करनी है। इस ब्रैकेट में से सिर्फ आपको डी और डी स्क्वायर की ही टर्म लिखनी है। सो लेट अस डू इट। 1, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, माइनस मैं लिखूंगी डी स्क्वायर बाय 4 और माइनस 5d/4। ठीक है, सिंप्लीफाई किया मैंने इस टर्म को, सेकेंड टर्म को निगेटिव साइन मैंने अटैच किया। अब देखो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर आप करके देखो, डिनोमिनेटर तो 4 स्क्वायर में 16 ही होने वाला है, लेकिन डी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, पहली टर्म कौन सी होगी, डी स्क्वायर का स्क्वायर, डी टू द पावर 4। डी टू द पावर 4 मींस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, वो टर्म हमें नहीं लिखनी है। डी स्क्वायर स्क्वायर डी टू द पावर 4, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल, निगलेक्ट दैट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डी स्क्वायर इनटू 2 टाइम्स अब a प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म डी स्क्वायर स्क्वायर हम निगलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म 2 टाइम्स डी स्क्वायर इनटू 5d, उसमें डी क्यूब की टर्म होगी, डी क्यूब की टर्म इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी पॉसिबल है तो निगलेक्ट करो। अब लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस बी का स्क्वायर, लास्ट टर्म होती है b स्क्वायर, b क्या है 5d, 5d स्क्वायर इज नथिंग बट 25d स्क्वायर, और d स्क्वायर की तो टर्म होनी चाहिए क्योंकि x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो हमें d स्क्वायर की टर्म चाहिए और d भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉसिबल है। सो इट इज 25d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। आ गया समझ में। डिनोमिनेटर लास्ट टर्म आप देखो, ये वाली टर्म आप देखो, डिनोमिनेटर स्क्वायर 4 स्क्वायर तो 16 होने ही वाला है, डी स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर, इनमें 3 टर्म्स रहेगी, a प्लस बी स्क्वायर है तो 3 टर्म्स रहेगी। पहले टर्म में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा था डी स्क्वायर स्क्वायर डी टू द पावर 4, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं था, निगलेक्ट किया। सेकेंड टर्म में डी क्यूब आ रहा था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल, निगलेक्टेड। लास्ट टर्म 5d स्क्वायर 25d स्क्वायर और d स्क्वायर मींस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि पॉसिबल है, इसीलिए हमने 25d स्क्वायर टर्म लिखी। एंड देन आई हैव द टर्म x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसे आप सिंप्लीफाई करो, 1/4 1 माइनस 5d/4 पहले मैं लिखूंगी 1, देन माइनस 5d/4 और माइनस d स्क्वायर बाय 4 प्लस 25d स्क्वायर बाय 16। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं d स्क्वायर बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या होगा d स्क्वायर बाय 4, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर 4 into 4 विल बिकम 16। ठीक है, तो d स्क्वायर बाय 4 में माइनस 4d स्क्वायर बाय 16 लिख सकती हूँ। अब 25d स्क्वायर बाय 16
minus 4d square by 16 is nothing but 21d square divided by 16. And then my function is x square plus 7x plus 9. Okay, now do simple multiplication. 1 into x square plus 7x plus 9 तीन टर्म्स है ब्रैकेट में और लास्ट ये ब्रैकेट है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो 1 into this bracket is x square plus 7x plus 9 अब minus 5d by 4 into this bracket क्या हो जाएगा minus 5d by 4 into this bracket minus 5 by 4 is constant it should be written as it is and d of this bracket means derivative of this bracket. What is derivative of x square? Twice x. What is derivative of 7x? 7. What is derivative of 9? 0. We should stop. Last term, 21d square by 16 into this bracket. 21d square by 16 into this bracket. So I will write down 21 by 16 as it is and d square of this bracket क्या हो जाएगा d square is second order derivative of x square plus 7x plus 9 अब मुझे बताओ x square plus 7x plus 9 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ x square twice x डेरिवेटिव ऑफ 7x 7 डेरिवेटिव ऑफ 9 0 उसका फिर से डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 डेरिवेटिव ऑफ 7 0 so 21d square by 16 into this bracket क्या हो जाएगा 21 by 16 is written as it is d square of this bracket is 2 second order derivative of x square plus 7x plus 9 is 2 okay और अब आपको ये जो राइट हैंड साइड है इसे सिंप्लीफाई करना होगा सिमिलर टर्म्स जो आएंगी एक x square की टर्म आएगी एक x की टर्म आएगी एक कांस्टेंट टर्म आएगी उसे आप सिंप्लीफाई करो और आपको pi मिलेगा 1/4 x square plus 9x by 2 plus 23/8 आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो आपको ये pi मिलेगा 1/4 x square plus 9x by 2 plus 23/8 okay and once we get this pi add a cf and pi to write down the complete solution आप complete solution आप easily लिख सकते हो आपको सिर्फ लास्ट स्टेप से ये टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी है यू कैन इजीली डू इट एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म प्रेजेंट है 7x और माइनस 5/4 into 2x है सिंप्लीफाई करो यू गेट 9x plus 2 then 9 minus 5/4 into 7 plus 21 by 16 into 2 आप सिंप्लीफाई करो you get the term as 23/8 add cf and pi to get the complete solution okay so कुछ डिफिकल्टी पूछनी है इस प्रॉब्लम में कौन सी स्टेप है जो समझ में नहीं आई आप सेकंड स्टेप मैम सेकंड स्टेप मींस कौन सी सेकंड स्टेप मुझे नहीं समझ में आ रहा ये एक्सपेंशन वाली बोल रहे हैं क्या फ्रॉम दिस pi के बाद की वो सेकंड में okay see here from this bracket in this bracket lots of terms are there but from this bracket in which terms we are interested मुझे बताओ x square plus 7x plus 9 पे हमें ये सभी टर्म्स ऑपरेट करनी है ओके एक्चुअली d की टर्म्स होगी d स्क्वायर की टर्म होगी d क्यूब की टर्म होगी d to the power 4 की टर्म्स होगी इस ब्रैकेट में we have to operate these terms on x square plus 7x plus 9 tell me how many times you can differentiate this term x square plus 7x plus 9 को आप ज्यादा से ज्यादा कब तक डिफरेंशिएट कर सकते हो 2 टाइम्स बराबर है x स्क्वायर की टर्म है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x हो जाएगा ट्वाइस x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा फर्दर डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल और इट विल बिकम 0 तो ये जो ब्रैकेट है इनमें हम सभी टर्म्स जो लिखेंगे उनमें से सिर्फ हम d और d स्क्वायर की ही टर्म कंसीडर करेंगे क्योंकि एट द मोस्ट यू कैन डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 2 टाइम्स और इसीलिए हमने d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर को जब एक्सपांड किया तो हमें d टू द पावर 4 की टर्म मिली थी हमने निगले की लिखी नहीं है दूसरी टर्म में d क्यूब प्रेजेंट होगा
2 टाइम्स डी स्क्वायर इंटू 5d में डी क्यूब प्रेजेंट हो